to my YouTube channel Educare by Akash Sharma. Myself Akash Sharma. Today I am making this video to share you the usage of present indefinite tense or simple present tense. This video is going to be very useful for sharpening your grammar skill as well as your conversational skill. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं tenses. Tenses जो होते हैं, there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. Present tense, whatever is going on present. Past, that has already gone. Future, yet to come. So there are three types of tenses: present, past and future. All these three tenses have four subcategories: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. I repeat, there are four subcategories: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So we will have present indefinite, past indefinite, future indefinite. Likewise, present continuous, past continuous, future continuous. Present perfect, past perfect and future perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. So there will be 12 types, 12 lessons on tenses. So I am going to start today with present indefinite tense. इसको concept को पूरा समझने के लिए please watch the video till its end. Do not skip the video, like the video and share it with your friends. Start करते हैं present indefinite tense. Present indefinite tense. What is the identification of present indefinite tense? Identification means पहचान. How do we come to know that this sentence belongs to present indefinite tense? So those sentences that end in Hindi with the word ता है, ती है and ते है. राम स्कूल जाता है, बच्चे पार्क में खेलते हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, लता कपड़े धोती है. So all those sentences that end with the word ता है, ती है and ते हैं, वो सारे के सारे sentences belong to present indefinite tense. Now once we have come to know that this particular sentence belongs to present indefinite tense, then how can we translate it in English? So there is a simple rule: subject plus first form of verb. Subject plus first form of verb plus s or es and then object. I repeat, subject with first form of verb plus s or es plus object. जैसे राम स्कूल जाता है. So there is ता है, तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. नाउ हाउ वी विल कन्वर्ट इट इन इंग्लिश. सब्जेक्ट इज करने वाला, वट एवर द पर्सन इज डूइंग पर्टिकुलर एक्ट, तो सब्जेक्ट इज राम. देन वी विल यूज वर्ब. वर्ब इज जाना, जा रहा है, जाता है. सो वी विल यूज वर्ब. वर्ब जाने की गो. अब गो के साथ एस और ईएस में से गोज बनाने के लिए आई विल राइट गोज ईएस. कहां जाता है? टू स्कूल. सो राम गोज टू स्कूल. आई प्ले हॉकी. आई प्ले हॉकी. दे speak English fluently. Ram and Sham eat bananas. So अब यहां पर क्या चीज है? एस और ई एस का यूसेज देखिए. राम गोज, आई प्ले, दे स्पीक, राम एंड श्याम ईट, शी कुक्स.
सो एस और ई एस का यूसेज देखना है। व्हेन अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट और राम, श्याम, singular, then we will use verbs first form with s or es. But if the subject is plural, plural with exception I and you, I, you, we, they, or plural children, Ram and Sham, so then we will use only verb first form without s or es. So now is it clear to you? Ram goes, s or es लगा है because Ram is singular. I play, exception is I and you. I play. They speak, plural है so without s or es. Ram and Sham plural है so without s or es. So this is, what type of sentence is this? Affirmative sentences. Affirmative sentences or simple statements. Simple statements. So you can frame as many sentences like I go to school, they play football in the evening, children learn how to cook samosas, whatever you want to speak. Any sentence that ends with ta hai, ती है और ते है, you can translate it in this way. Rule क्या है? Subject with first form of verb plus s or es and then at the end object. S or es where subject is singular and without s or es verb use करनी है where subject is I, you or plural. So I hope this is clear to you. नेगेटिव सेंटेंसेस, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नाउ वी विल स्टडी नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे? वेयर वी यूज नहीं जाता है. सो नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहां पर डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन एट द एंड ऑब्जेक्ट. आई रिपीट, सब्जेक्ट then helping verb do or does plus not plus verbs first form plus object. जैसे राम स्कूल नहीं जाता है तो सब्जेक्ट इज राम नहीं जाता है, तो डू और डज में से एक चीज लगेगी. राम डज नॉट गो टू स्कूल. आई डू नॉट eat chips. They do not buy crackers. She does not wash clothes. So कहीं डू लगा है, कहीं डज लगा है. सेम रूल है जो आपने सीखा है एस और ई एस के यूसेज के लिए. तो एस और ई एस हम कहां लगा रहे थे? वेयर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. सो राम इज सिंगुलर, वी हैव यूज्ड डज. आई एंड यू आर एक्सेप्शंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो आई डू नॉट, दे प्लूरल डू नॉट, शी सिंगुलर तो डज नॉट. सो डज, जब हमने डज लगा दिया है तो रिपीट में जो लग रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है विदाउट एस और ई एस. क्यों? डू देखो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके साथ जब हमने एस और ई एस यूज कर लिया है देन वी विल नॉट यूज अगेन एस और ई एस इन द सेम सेंटेंस. सो इट बिकम्स राम डज नॉट गो टू स्कूल. आई डू नॉट ईट चिप्स. ऐसा नहीं होगा राम डज नॉट गोज टू स्कूल, इट्स रॉन्ग. राम डज नॉट गो टू स्कूल. I do not eat chips. They do not buy crackers. And she does not wash clothes. So you can try more sentences like this. अब इसके बाद I will tell you how to translate interrogative sentences. कैसे sentences हैं? Interrogative sentences. Interrogative sentences. Interrogative sentences कौन से होते हैं? जहां पर we use question mark. सो क्या राम स्कूल जाता है?
ये भी एक इंटेरोगेटिव हुआ ये स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट है? दिस इज पॉजिटिव इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। क्या राम स्कूल जाता है? व्हेन आई यूज क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो ये भी तो क्वेश्चन हुआ। सो इट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो इसका क्या रूल होता है? द रूल इज डू डज, we use it before subject. We will start constructing sentences using helping verb first. So we will use do, does plus subject plus not if required. अगर negative interrogative sentences है और वहां पर not की जरूरत है, so उसको use किया जाता है subject के बाद, then verb की first form और उसके बाद object and thereafter question mark. So if it is I do not eat chips, do पहले आ जाएगा, I अगर not लगना है तो not eat chips और at the end question mark. Ram does not go to school. Does Ram go to school? Do they play with you? Does Meena prepare food? So what is this? Helping verb पहले, then subject, not अगर required हो तो यहाँ लगेगा, then verbs first form and object. So do I not eat chips? क्या मैं chips नहीं खाता? Does Ram go to school? क्या राम स्कूल जाता है? Do they play with you? क्या वो तुम्हारे से साथ खेलते हैं? Does Meena prepare food? क्या मीना food prepare करती है? So this is the rule for interrogative sentences. I hope this is clear to you. Present indefinite tense में when we use in simple statement or affirmative statement, I use Ram goes to school, but in negative sentences I use Ram does not go to school. And when I frame interrogative statement of this, then does Ram go to school or does Ram not go to school? So अब इसका आगे हम usage देखेंगे. I'll let you know how to use present indefinite tense to frame your daily routine. How can we use this tense to tell or describe our daily routine? देखिए, I have just put down some examples for you. जैसे दिशा gets up at 6 o'clock. तो कैसे मुझे पता लगा का हाउ टू ट्रांसलेट इट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? बिकॉज दिशा गेट्स अप एट 6 o'clock. दिशा 6 बजे उठती है, टी है आ गया, सो वी विल ट्रांसलेट इट यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो सब्जेक्ट इज दिशा, देन गेट्स अप उठना, उठती है, तो गेट्स अप एस और एस में से गेट्स के साथ एस लगेगा. गेट्स अप एट कितने बजे? एट 6 o'clock. सो यू कैन राइट I get up at 6 o'clock. जो जहां पर whatever wherever I have used she or disha, you can use yourself. I, जैसे she brushes her teeth. She subject, brush verb first form with s or es, brushes her teeth. तो I brush my teeth. She takes bath. I take bath. She gets ready for school. I get ready for school. देखिए फर्क क्या होगा कि she के साथ we are using verbs first form with s or es, but when you will use or write it with I, then you will not use s or es, you will just use verbs first form. So मैंने लिखा है she takes bath, you will write I take bath. She gets ready for school, I get ready for school. She eats or takes her breakfast with milk. I eat or take my breakfast with milk. She goes to school at 8 o'clock. I go to school at 8 o'clock. She comes back from school at 2 o'clock. I come back from school at 2 o'clock. After coming back, she takes a shower, refreshes herself and eats lunch. So you can write it as after coming back, I take a shower, refresh myself and eat lunch. She rests for some time. I rest for some time. She does her homework till 6 o'clock. I do my homework till 6 o'clock. She plays in the evening.
I play in the evening. She watches TV for half an hour. I watch TV for half an hour. She takes dinner at 8:30. I take dinner at 8:30. She goes to bed at 10 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. So this way you can use present indefinite tense to describe your daily routine. So I hope this video is very much useful to you. For the beginners this is going to be a very useful video. So आपको क्या करना है, आज प्रैक्टिस करनी है ऐसे sentences को translate करने की that end with ता है, ती है and ते है. Start writing at least 10 sentences of each type: affirmative, then interrogative, negative, positive interrogative or negative interrogative. Or after that you should practice your writing.